Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction of neuron. Let's start. Students, now the cells of nervous system. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो दो मेजर डिविजन्स हैं सेल्स की पूरे नर्वस सिस्टम में, मेजर डिविजन्स। और उन मेजर डिविजन्स में नंबर 1 आर द न्यूरोग्लाया or simply we can say them glial cells. And the other category is the neurons. तो जहां तक बात है न्यूरॉन्स की, सबसे अहम सेल तो नर्वस सिस्टम का यही है, सबसे अहम। So neurons, they are the chief structural and functional unit of nervous system. Which have the ability to conduct the nerve impulse as well as can generate nerve impulse, which is a wave of electrochemical changes that travels along the length of the neuron involving biochemical reactions. So these are neurons. तो सबसे चीफ का वर्ड याद रखना है। तो सेल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन चीफ स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कौन से जो सेल्स हैं तो याद न्यूरॉन्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के जिनको हम कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स, या सिंपली वी कैन से देम द ग्लाइल सेल्स। सो these cells make up to half of nervous system, मतलब के मुकाबले के, इनके मुकाबले भी है। यानी कि अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो अब तादाद की बात हो रही है, तो हाफ के करीब करीब जो है जो सेल्स हैं, दे आर द न्यूरोग्लाइल सेल्स and are not involved in conduction or generation of nerve impulse. ना तो ये कंडक्ट करते हैं, ना ही जनरेट करते हैं नर्व इंपल्स को। तो फिर क्या फंक्शन है जी स्टूडेंट्स? रादर they are involved or they play or provide protection and nutrition किसको? to neurons. So they have got supportive role. So are supportive in function. Clear? So that is the basic difference between them. Up to 50% of them, the nervous system that is made up of the neuroglial cells. While if we talk about the chief cells, तो chief की बात करेंगे तो वो सिर्फ न्यूरॉन है, ठीक है। अब जो neuroglial cells हैं, इनका मेजर काम हमने डिस्कस किया। They provide nutrition and they provide protection. So they are supportive in their nature. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ तरह के न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं थ्रू आउट आवर नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह का आपको पता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है। तो उन दोनों के अंदर ये न्यूरोग्लाइल सेल्स मौजूद हैं।
सो उनमें कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं? लेट्स हैव अ शॉर्ट लुक. If we talk about the central nervous system, CNS, clear? In the CNS, the neuroglial cells include central nervous system, our CNS. तो उसके अंदर कौन कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स हैं? नंबर 1 आर द एस्ट्रोसाइट्स. So they are involved in the formation of blood brain barrier, plus they are also involved in the control levels of neurotransmitters. Neurotransmitters at synapse. The second category of the neuroglial cells are the ependymal cells. They are involved in the formation of CSF, the cerebrospinal fluid. The third category is the oligodendrocytes. They are involved in myelination or they myelinate axons in central nervous system, means the brain. Number 4 are the microglia. Microglia, so they are the immune cells of brain. They are the immune cells of brain. And they remove dead cells by phagocytosis. By phagocytosis. तो ये 4 न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि सीएनएस में मौजूद हैं. इसी तरह से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहां पर भी मौजूद हैं. सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन देम. आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर. Neuroglia in peripheral nervous system, PNS, peripheral nervous system. यहां पर 2 तरह के सेल्स मौजूद हैं. नंबर 1 आर द सैटेलाइट सेल्स. So they cover cell bodies in ganglia. जहां पे गैंग्लिया बनते हैं उनके सेल बॉडीज को कवर करते हैं सैटेलाइट सेल्स. और दूसरे हैं जी शॉन सेल्स. The second type of neuroglial cells in the peripheral nervous system. So they are involved in the myelination or they myelinate neurons in peripheral nervous system, plus they are also involved in regeneration of neurons. Clear? So एक थोड़ी बहुत information related to the neuroglial cells. Now coming towards the second, the chief structural and functional unit of the nervous system, that are the neurons. So neurons, dear students, they have got 3 basic parts. Neurons, they have 3 basic components. That is, number 1, the cell body. Number 2 is the
dendrites. Number 3 are the axons. So we are going to discuss them in detail. Dear students, now we are going to discuss the neuronal structure of a neuron. So 3 basic parts iske: the axon, cell body, and the dendrites. So this is a typical neuron structure. In the center, there is nucleus, central nucleus, having prominent nucleolus. And there are nasal granules. So these are the nasal granules. So these are also present in these branches. Remember this point, please. So these are nasal granules. And the endoplasmic reticulum. But this is the rough endoplasmic reticulum. And also the Golgi apparatus. So Golgi apparatus over here. So these are the major structures present in the this region. And so this is the myelin sheath. And the Schwann cells around the axon. Now, dear friends, neurofibrils are there. So these are the dendrites. This is a single dendrite, and as there are many in number, so they are called as dendrites. These are small fibers. And this is the cell body. Cell body. And the structure is axon. तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स एक टिपिकल न्यूरॉन सेल के. क्लियर? अब आ जाइए इनके बाकी फीचर्स के हवाले से. सो दिस इज न्यूक्लियस with a prominent nucleolus, and
This is the Golgi apparatus. And this one is the rough endoplasmic reticulum. Clear? And these are the nasal granules. ये आपको जो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे ऑरेंज कलर के अंदर. So these are the nasal granules. So let me label first. और उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. And this one is Schwann cell, जो हमने डिस्कस किया, a neuroglial cell, Schwann cell. और ये इसने सेक्रेट की हुई है द माइलिन शीथ. और ये सारा पोर्शन एक्सॉन का वो पोर्शन जहां पर ये माइलिन शीथ नहीं है, दिस वन एंड दिस वन, इट इज कॉल्ड एज, दीज आर द नोड्स ऑफ रेनवेयर. ठीक. और ये रहा जी टर्मिनल पोर्शन, दिस इज द टर्मिनल एक्सॉन. और दिस वन इज द साइनेप्टिक नॉब. Clear? And these structures are the neurofibrils. And one more thing, this axon, this is axon's plasma membrane called the axolemma. And this is the cell body, and this is the neurolemma. Clear? This is the plasma membrane of this whole structure, the neuron. तो आइए अब एक्सप्लेन करते हैं इन सब चीज़ों को बारी बारी. तो ये आपको अभी तो मैंने जस्ट इसको लेबल किया है. तो स्टार्ट करते हैं नेजल ग्रैन्यूल से, सबसे टॉप से. सो नेजल ग्रैन्यूल्स क्या हैं, ये आपको देख रहे हैं बहुत सारे. सो नेजल ग्रैन्यूल्स, दीज आर अ ग्रुप of ribosomes. These are a group of ribosomes associated with the rough endoplasmic reticulum. याद रखना है कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, नॉट स्मूथ, इट इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. एंड Golgi apparatus. And Golgi apparatus. Clear? So these are the nasal granules. इनका फंक्शन क्या है? Nasal granules, these are involved in protein synthesis here. These are involved in protein synthesis, and now also choline acetyl transferase, which is the enzyme. ये enzyme है. This is the enzyme for acetylcholine. ये short form उसकी abbreviation जो acetylcholine synthesis. acetylcholine को बनाने के लिए जो enzyme है, which is called as choline acetyl transferase, ये भी यहीं पर synthesize होता है, nasal granules. And these granules are named on the behalf of the scientist who discovered them. So ये कहाँ पर मौजूद हैं? They are present in the cell body. ठीक है, एक स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर, ये सारा जो राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द सेल बॉडी. ठीक है. और दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियोलस, अ सिंगल यूजुअली एंड प्रोमिनेंट. आप देख सकते हैं, इट इज प्रोमिनेंट, बहुत वाज़ेह है. और दूसरा इसमें देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के हवाले से याद रखना है, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड. इट इज सेंट्रली प्लेस्ड. सेल बॉडी में बिल्कुल सेंटर में मौजूद है. और न्यूक्लियस चूंकि ये सारे द मेन पार्ट ऑफ द सेल बॉडी, और यही सारी एक्टिविटीज को संभालेगा. क्लियर? Golgi apparatus or rough endoplasmic reticulum, so both of these are associated with ribosomes in formation of proteins. Clear?
यहां पर इनका ये फंक्शन। और सेल बॉडी ये आके, ठीक है, सेल बॉडी के हवाले से कुछ और चीजें मेंशन कर लेते हैं। तो सेल बॉडी का दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरिकैरियन, पेरिकैरियन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। क्लियर? इट इज अ मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। क्लियर? और इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से मौजूद हैं? वी हैव डिस्कस देम। हैव न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, एंड इट ऑल्सो हैव द नेज़ल ग्रैन्यूल्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिए, नेज़ल ग्रैन्यूल्स प्लस गोल्जी apparatus plus rough endoplasmic reticulum. So all these, and if it is intact, if the cell body is intact, it can regenerate the processes. It can regenerate the processes, means the dendrites and axon, जिनको अगर ये इंटैक्ट है, ये इसके ये खराब नहीं हुई, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि ये बाकी के प्रोसेसेस को दोबारा से रीजनरेट करवा सके। सो इज द मेजर पार्ट, द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट। क्लियर? सो मैनी बायो synthesis of materials takes place in cyton. Clear? बहुत सारे सेल में प्रोसेस यहीं पर हो रहे होते हैं। और नाउ कमिंग टुवर्ड्स द, तो ये तो सेल बॉडी हो गया, उसके बाद आ जाते हैं डेंड्राइट के ऊपर। अच्छा, डेंड्राइट को लेट मी फिनिश ओवर हियर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लेके आ रहा हूँ डेंड्राइट को, यहाँ पर स्पेस है मेरे पास। सो दिस इज a dendrite. So dendrite, it is the cytoplasmic or protoplasmic process. Clear? It is the cytoplasmic, इसको cytoplasmic भी कहते हैं और protoplasmic भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म से ही तो निकल रहा है। A process that carry nerve impulse towards cell body, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर के जाता है मैसेज को इस तरह से, like this is the direction of flow of nerve impulse, ठीक है, तो अंदर की तरफ यानी कि सेल बॉडी की तरफ लेकर के जा रहा है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखनी है, नेज़ल ग्रैन्यूल्स के हवाले से स्किप ना हो जाए। नेज़ल ग्रैन्यूल्स, they are absent. Nasal granules, they are absent in axon and dendron. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेज़ल ग्रैन्यूल से देख सकते हैं, ये यहां पर एक्सॉन में भी नहीं है और डेंड्रॉन में भी नहीं होते, डेंड्राइट्स में हैं। याद रखना, डेंड्रॉन और डेंड्राइट में फर्क आपको पता ही होगा, मैं भी यहां पर क्लैरिफाई करता हूं। सो डेंड्राइट्स, so they are cytoplasmic processes that carry nerve impulse towards the cell body. Clear? They are small and small fibers. These are small fibers, and if it is a single fiber, ये एक एक्सेप्शन आने वाली है जो आपसे जिक्र कर रहा था डिस्कस में। If it is single fiber, if it is single fiber, अगर तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस हों, एक ही बड़ा, लेकिन अगर एक ही बड़ा फाइबर हो, so if it is single fiber, it is called dendron, और dendron याद रखना है, they are present in the sensory neurons. Clear? तो डेंड्राइट में तो नेज़ल ग्रैन्यूल्स हैं, let me clarify, they are present in the cell body plus dendrites. एब्सेंट किसमें है? द एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, ठीक है। जो डेंड्रॉन आगे हम ड्रॉ करेंगे, फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की, तो उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन होती हैं उनका एक ही सिंगल फाइबर होता है जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर के आ रहा होता है, जिसको हम पेरिफेरल ब्रांच भी कहते हैं। सो उसके अंदर भी ये नेज़ल ग्रैन्यूल्स नहीं होते। क्लियर?
लैक निजिल ग्रेन्यूल्स। किसकी बात हो रही है? डेंड्रॉन की। ठीक है, मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया, ये बात याद रहे। बट इन डेंड्राइट्स दे आर प्रेजेंट। क्लियर? और सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस पार्ट। सो ये दो पार्ट हो गए हमारे, सेल बॉडी भी हो गया, डेंड्राइट भी हो गया। अब सेल बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर थे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे इसके नीचे वाले पोर्शन की। तो यहां पर जो ये प्रोसेस है, इट कैरीज द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द, सो ये यहां से लेकर के यहां तक सारा हिस्सा ये वाला, दिस इज कॉल्ड, दिस इज एक्चुअली द एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन। ये सारा हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ये सारा एक्सॉन है। और एक्सॉन के पास क्या क्या चीजें हैं, अब याद रखने वाली जो चीज है, द एक्सॉन हैव, एक्सॉन इट इज द प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर or process that carry impulse away from cyton, मतलब कि सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है। ठीक है, यहां से नीचे की तरफ जाएगी। और याद रखें, नो निजिल ग्रैन्यूल्स, इसमें कोई निजिल ग्रैन्यूल्स नहीं है। प्लस अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और चीज ध्यान में रखनी है सेल बॉडी के एतबार से, जो बाकी तरह मुख्तलिफ तरह के तो ऑर्गेनल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, द सेल बॉडी लैक्स सेंट्रियोल्स, इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, क्योंकि जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं रखी न्यूरॉन के अंदर लिए, न्यूरॉन के पास, तो इस वजह से इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। दैट इज व्हाई द न्यूरॉन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एमाइटोटिक सेल, मतलब ऐसा सेल जिसमें माइटोसिस नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है। और नाउ द नो निजल ग्रैन्यूल्स, बट इट हैव, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद क्या है? दे हैव, it have microtubules plus neurofibrils plus mitochondria plus rough endoplasmic reticulum। तो ये चार स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं ये चारों चीजें, प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सोप्लाज्म, ये मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये न्यूरोफाइब्रिल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको न्यूरीलेमा कहते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा था प्लाज्मा लेमा, जो से इसके ऊपर जो होती है मसल फाइबर, उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हमने कहा था सार्कोलेमा। इसी तरह से इसको हम कहते हैं न्यूरीलेमा, ये स्पेशल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एबिलिटी रखी रहता है नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने की। श्वान सेल, सो इट इज अ न्यूरोग्लियल सेल, इट इज अ न्यूरोग्लियल सेल of this of the PNS, of the peripheral nervous system, which secrete myelin sheath। ये myelin sheath को secrete करें, देखें, और इसने रैप किया होता है, जैसे गोल गोल होता है और इसने जब पट्टी बांधी होती है ना किसी चीज की, जिस तरह पट्टी, ये रैप्ड होते हैं जो myelin, जो श्वान सेल्स, और ये myelin sheath। सो myelin sheath जो है इसका काम होता है इंसुलेशन, द myelin sheath insulates, it insulates the neuron। कौन सी जगह पे? एक्सॉन पे, इसको इंसुलेट कर देती है। इंसुलेटर किसे कहते हैं? विच आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब यहां पर नर्व इंपल्स नहीं आ सकती। इसके पीछे अल्लाह ताला ने एक रीजन रखी, यहां पर नर्व इंपल्स नहीं आती यहां पर, तो इसलिए यहां पर जब यहां से सेल बॉडी से नर्व इंपल्स आएगी तो यहां से जंप करके आएगी कहां पर? जहां पे माइलिन शीथ नहीं है। और माइलिन शीथ कहां पर नहीं है? एट द नोड्स ऑफ रेनवियर। तो यहां से जंप करके यहां पे, फिर यहां से जंप करके यहां पे, यहां से जंप करके यहां पे। तो ये जो जंपिंग फैशन में ये नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही है, जिसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन। और ये क्यों रखा ऐसा? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब यहां से मैसेज ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है हमारे ऑर्गन्स को, तो फौरन पहुंचे। मैं कहता हूं मैं यहां से चल कैसे जाऊं, या मुझे कहा जाए जंप करके जाओ, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? जंप करके। इसलिए यहां से जंप करके जाती हैं ताकि आप बहुत ही स्पीड के साथ गुजर सकें। और आपको पता है कि जो नर्व सॉल्टेटरी कंडक्शन की वजह से जो नर्व इंपल्स की स्पीड है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। क्लियर? अब ये जो एक्सॉन है डियर स्टूडेंट, इसकी याद रखिएगा लेंथ, ये कुछ मिलीमीटर से लेकर के जो एक्सॉन की जो लेंथ है, द एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है
ऑफ न्यूरॉन, और दूसरी बात ये इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू मोर देन अ मीटर, 1 मीटर से भी लंबा एक्सॉन होता है। हैरान हो रहे हैं? हैरानी की कोई बात नहीं है। आपने पढ़ी शियाटिक नर्व, ये जो थाइस को जाती है, ठीक है, यहां से लोअर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है, ठीक है। सो द एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, द न्यूरॉन्स ऑफ शियाटिक नर्व, न्यूरॉन्स ऑफ शियाटिक नर्व, वो इतने लंबे होते हैं कि उनके एक्सॉन्स, और सबसे लंबा न्यूरॉन भी वही होता है, यहीं पर पाए जाते हैं, तो इनके एक्सॉन्स काफी लंबे होते हैं, ठीक है, 1-1 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं द न्यूरॉन्स ऑफ द शियाटिक नर्व। सो एक तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद इनका जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसके ऊपर कोई माइलिनेशन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई माइलिन शीथ नहीं है, इसे कहते हैं टर्मिनल एक्सॉन, और इसके एंड के ऊपर मौजूद है नॉब, इसे कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, और साइनेप्टिक नॉब क्या करेगी, इट विल बी इन्वॉल्व्स synapse with न्यूरॉन और मसल। न्यूरॉन के साथ बनाएगी तो वो न्यूरोनल साइनेप्स कहलाएगा, मसल के साथ ये साइनेप्टिक नॉब जो है वो साइनेप्स बनाएगी, जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स की होती हैं, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाएगा, NMJ। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा related to this structure, the nodes of Ranvier, so the points where along the axon where there is no myelin sheath, याद रखिएगा, नो माइलिन शीथ, कहां पर नहीं है, एट द नोड्स ऑफ Ranvier। क्लियर? सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। और इसके हवाले से मजीद एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर किसी भी तरह का कोई वो नीजल ग्रेन्यूल नहीं है, एक्सॉन के अंदर किसी भी तरह का कोई नीजल ग्रेन्यूल नहीं है, और ये जो सबसे लेंथी पार्ट है न्यूरॉन का वो भी एक्सॉन ही होता है। डेंड्राइट्स, अच्छा, ये डेंड्राइट एक सिंगल फाइबर को कहेंगे, प्लूरल चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स हैं जो कि मैसेज लेकर के आ रहे हैं, सो दे आर जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज डेंड्राइट्स। लेकिन अगर एक ही फाइबर आ रहे हैं सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर के, तो वो कहलाएगा डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन के अंदर एक्सॉन, डेंड्रॉन के अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि जो एक्सॉन होता है, दिस इज एक्सॉन, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, द डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, द डायमीटर और थिकनेस, जिसको हम कह सकते हैं thickness of axon remains constant। मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ, एक एक्सॉन चाहे वो 1 मीटर लंबा है या जितने भी उसकी लेंथ है, तो थ्रू आउट द लेंथ उसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? सो ये चीज आपने जहन में जरूर रखनी है कि डायमीटर इसका कांस्टेंट रहना है। और एक और चीज आपने ये भी जहन में रखनी है, जैसे कि डेंड्राइट्स के हवाले से, डेंड्राइट्स देखें यहां से बेस से निकलकर और जो एंड्स की तरफ टेपरिंग है, इनके बेस थोड़े से वाइड हैं लेकिन एंड्स इनके क्या हैं, टेपरिंग, तो ये भी बात इसमें मेंशन कर लीजिए। सो द डेंड्राइट्स दे टेपर फ्रॉम बेसिस, यानी अपनी बेस से शुरू होकर के टुवर्ड्स एंड्स, ये एंड्स की तरफ क्या करते हैं, टेपर का मतलब होता है पॉइंटेड हो जाना, यहां से चौड़े फिर आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ये बारीक होते चले जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डेंड्राइट।